Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is internal methods of quality assessment. इसके भी हम लोगों ने देखने हैं MCQs. फर्स्ट वाला जो है हमारे पास MCQs, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ QA. सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि QA क्या है. QA क्या मीन है कि फुल फॉर्म है क्वालिटी असेसमेंट. और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्वालिटी असेसमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड. देन ऑप्शन 2 द एग्जांपल ऑफ QA. एग्जांपल है जी इसकी वेरिफिकेशन. देन नंबर 3 व्हेन द नोडल पॉइंट फॉर द नेशनल मेजरमेंट सिस्टम इज़ लोकेटेड. इसका जो सिस्टम लोकेटेड है ना वो न्यू दिल्ली में है. देन नंबर 4 LCL फॉर द R चार्ट इज़ गिवन बाय D3R. और देन नंबर 5 द फेस आई एप्लीकेशन फॉर X एंड R चार्ट द कंट्रोल लिमिट obtained from the equations are treated as trial limits है इसका आंसर. Then number 6 the process of standard deviation is given by R over D square. Then number 7 a tolerance diagram is also called tire chart. Then number 8 is there any relationship between specification limit and control limit of X and R chart? No, कोई लिमिट नहीं होती. Then number 9 control limits are limits driven by the natural variability of the process. Then number 10 the natural variability of the process is measured by process standard deviation. इसका आंसर है. Then number 11 what type of chart will be used to plot the number of defects in the output of any process? P chart. Then number 12 process control is carried by. प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है जबकि ड्यूरिंग प्रोडक्शन. नंबर 13 लो कॉस्ट हायर वॉल्यूम आइटम्स रिक्वायर लिटिल इंस्पेक्शन. हाई कॉस्ट लो वॉल्यूम आइटम्स रिक्वायर इंटेंसिव इंस्पेक्शन. इसका आंसर है. दैन नंबर 15 द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू मीन ऑफ प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन. दैन नंबर 16 the percent of the sample mean will have values that are within plus minus 3 standard deviation of the distribution mean is 99.7. Then number 17 the driving limits between random and non-random deviation from mean of the distribution are known as. इसका आंसर है control limits. Then number 18 the chart used to monitor attributes is P chart. Number 19 central tendency of a process is monitored in mean chart. Number 20 the chart used to monitor variables is range chart. Then 21 the control chart used for the number of defects per unit is E chart. C chart है इसका आंसर. E लिखा गया. Then 22 the control chart used for the fraction of defective items in a sample is P chart. Then 23 the control chart unit used for the number of defects per unit is C chart. The process probability is calculated as LSL over 6 sigma. 25 a 6 sigma process has defect level below defects per million opportunities. इसका आंसर है 3.4. Then 26 आफ्टर कलेक्टिंग वाटर सैम्पल्स आर प्रिजर्व्ड किया जाता है इनको. देन 27 फर्स्ट सैम्पल फॉर एनालाइजिंग सेंड टू फील्ड बैंक. देन 28 स्पाइक रिकवरी इज़ अनएक्सपेक्टेबल ड्यू टू सिस्टेमिक एरर या सिस्टेमेटिक एरर. देन 29 errors that are collected analyzed are systematic errors. Then 30 acceptable spike recovery tells that errors occur in the field and during transport. Then 31 systematic error occurring in the field cause uncertainty in samples. Then 32 the product used for the quality assurance. इसका आंसर है ग्रेफाइट फ्यूरेंस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. Then 33 GPAAS involved initial calibration blank and initial calibration verification standard. Then 34 if a field blank is satisfactory then
B sample. Then 35, the method detection range of B is 0.1 to 10 times. Then 36, the samples are collected from the same type due to the similarity in composition. Then 37, sample is proceeded and followed by which sample is analyzed, CCV and CCB. Then 38, prescriptive approach is a method which prescribed quality assessment. Then 39, prescriptive approach to quality assessment duplicate samples, blanks, standards, and spike recoveries are measured by products. Then 40, the philosophological or pedagogical approach to assessing is called assessment method. Then 41, the internal number of a staff is called the internal quality assure. Then 42, the written derivatives of a quality control programs are necessary. Then 43, a standard reference material is the ideal choice. Then 44, concentration of analytes added to blank is 5 to 50 times. Then 45, synthetic sample is prepared from reagents से prepare किया जाता है. Then 46, which of the following is an example of QA? वेरिफिकेशन भी है और डॉक्यूमेंटेशन भी है. Then 47, internal method coordinate within the laboratory. Then 48, quality control assurance program have many purposes. Then 49, external approaches yet avoid replication. Then last वाला MCQ है हमारा 50, selection process consisting of a knowledge of the standard इसका आंसर है. Thanks, that's the end.